everyone. Finally, after a long time, I am doing live streaming. I don't know what's the cause behind this, but yeah, seriously, I'm doing live streaming. Now the interface of OBS is totally changed, and I'm facing trouble to set up OBS. So, for that reason, live streaming is not happens regularly, but now everything is fixed now, and we are doing live streaming daily at the same time, 10 o'clock to 12 o'clock, because it's my focus time, and I spend my lots of time in here. So that's reason, and now comment box is open, and now you can like chat with me, and show your ideas in the comment box. And if you know the new tech things, and you know something crazy and experimental, so now comment box is open, and you can write a message there, and text me, and I really give you answer of these all the comments. And I also want the big family, so please hit like, comment, and subscribe button, as you know that. So that's the reason I'm saying that. So let's do our work. So yeah, so let's open my account. So let's see how much problem we have solved. Yeah, I think I have solved uh, probably 13 to 14 question, I think. Yeah. So wait a minute. Life has no remote. Get up to chance yourself. Okay, that's a nice code. Okay, let's log in. Here, I don't know why it's saying again login, and this is my official mail ID. If you need any uh, help, so please visit my website. Let me check my live streaming is start learning from pre. Let me check my streaming is work fine or not. ओके, आई थिंक ये वाला नहीं था यार, रुको, ये वाला था. यस, स्ट्रेवो. No, this is my yeah, 2006 is my TOB, and I think ये वाला नहीं था यार, ये वाला था. ओके, वॉइस वगैरह भी आई थिंक सब फिक्स हो गया. रखिए, हमने 14 क्वेश्चन ये सॉल्व कर दिए थे. And let's move to the recursion and hashing part. Okay, so firstly let's solve what is hashing. Okay, let's read some notes. Okay, what is hashing? सो हम क्या करते हैं, आप बिगनर से लेकर के यहाँ पे हाई लेवल तक का पढ़ते हैं. सो वही हैशिंग इज अ प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट डेटा की इनटू अ फिक्स लेंथ साइज कैरेक्टर. A hash is a mathematical function. It enables efficiently data store, retrieve hash tables along 0 and 1 hash function. Hashing in data structure. ये वाला देखो. So हम क्या करेंगे, let's when we solve lots of question, then हम वहाँ पे देखेंगे. ओके, सो लेट्स सी हैशिंग क्या होता है. हैशिंग इज अ टेक्निक दैट यूज्ड टू इन डेटा स्ट्रक्चर efficiently stores and retrieve data with allow the quick access. Hashing involves mapping data specific index, सपोज करो कि डेटा को अगर इंडेक्स के साथ मैप करना है, ठीक है. और क्वेश्चंस लाइक
जहाँ पे मैपिंग वगैरह होती है, लाइक इंडेक्स और वैल्यू की मैपिंग होती है, वहाँ पे यूज़ होता है। नंबर ऑफ अकरेंसेस होता है, वहाँ पे भी बेसिकली यूज़ होता है। तो बहुत सारी जगह पे ऐसा है जहाँ पे हमारा हैशिंग यूज़ होता है, और मोस्ट इफ़िशिएंट एंड फाइनल एफिशिएंट वे में वो करता है। तो सो एक ये है। ओके, सो लेट्स सॉल्व। ओके, सो एक बार इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हैशिंग इज टेक्निक यूज्ड इन डेटा स्ट्रक्चर टू efficiently store, retrieve, store and obey the allow the quick access. Hashing involves mapping data specific index, देखो, डेटा एंड उसको मैपिंग करने के लिए इंडेक्सेस को इन एरे आइटम्स यूजिंग हैश फंक्शन दैट इनेबल्स रिट्रीव इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द की। ओके, सो हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं की का यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा आपका डेटा अवेलेबल है। सो बेसिकली दिस थिंग हैपन्स। ओके, सो the great things about hashing is we can achieve all the three of return, search, insert, and delete we of one. So the time complexity is very less. So यहाँ पे हम जहाँ पे आपका हैशिंग का यूज़ करते हैं, हैशिंग is mainly the implement set of items and a dictionary. Basically it works as a dictionary. Okay, and collision handling का भी काम करता है, ठीक है। इसको हम करेंगे। So this is a basic definition. Let's solve this counting frequencies of an array element. Okay, let's solve this. Okay, so counting frequency of the element. You have given a numbers of a size which has contain duplicate element. Okay, return a list of pairs. Each pair contain a unique element from the array is unique. You may return result in any order. Okay, so order is not necessary. Okay, so here we see 1 and 1 is appearing twice. So uh, yeah, so ये हो गया पहले 1 दो बार अपेयर हो रहा है, 2 दो बार, 3 एक बार। ओके, सो बेसिकली काउंटर फ्रीक्वेंसी। सो अगर मैं 7 की बात करूँ, 7 1 हो जाएगा। ओके, वैलिडेट हो गया। ओके, लेट्स ओपन माई लाइक मैं ओपन कर लेता हूँ अपना VS कोड एंड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, रिकर्जन हम कर लेंगे। हम एक नया फोल्डर बना देते हैं यहाँ पे, न्यू फोल्डर। हैशिंग, हैशिंग के अंदर काउंटेड फ्रीक्वेंसी डॉट cpp। चलो, फाइल बन रहा है, तब तक का मैं पानी भी नहीं आ रहा। I don't know why it's not running. अरे, मतलब बन ही क्यों नहीं रहा यार।
चलो तब तक का वो बनता है, हम उसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, इसको प्रिंट नेम में ही कर लेता है, ठीक है। सो हमें क्या दे रखा था, दिस लाइक ये क्लास दे रखी है, इसमें हमें सॉल्व करना है। ओके, सो फर्स्टली इंक्लूड द हेडर फाइल, ये कोड मिलते जाएंगे, ठीक है आपको। ओके, सो बहन का फ़ोन आ गया था, तो उसके इंटरमीन, so I create an object of this class obj1, ठीक है। ये बता सॉल्यूशन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे भी काम आ सकता है, ठीक है। हाउ टू सॉल्व दिस, ओके, हमने सॉल्यूशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया। सो int n which is the size of the n, ओके, int n which is the size, बना नहीं क्या यार फोल्डर, creating हैशिंग, int n cin n and vector enter nums of size n, और सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट enter the size of n, okay, enter cin n and c out enter the ements elements and for integer I0 I lesser than I plus c in nums of I। चलो बंद हो गया यार, चलो मैं इसी कोड को लेकर के इसको हटा के, हाँ, क्वेश्चन का नाम क्या था, काउंट फ्रीक्वेंसी, काउंट है फॉर eq डॉट cpp, सो नो पेस्टेड हियर, nums ऑब्जेक्ट मैंने कर दिया, देन लेट्स, ओके, सो मैं रिटर्न कर दूंगा। Okay, we have to return the vector, okay, so I create count object1 dot count, ये क्या हो रहा, चलो देखूंगा यार मैं भी अभी, एक चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, अपना मेन लॉजिक लिखते हैं, ओके। सो मैं क्या ले लूँगा, इतना कौन भौंक ला रहा है भाई,
So I will take a map int comma int mpp. अब मैं क्या करूँगा इन द आइटरेट कर दूंगा. सो पहले लॉजिक लिख लेते हैं. ओके फिर हम क्या करते हैं अपना करते रहेंगे. So what I am doing here, I will take a map int comma int mpp map ले लेंगे. So vector. Okay, so we have to just return the vector. Okay, so already is given that vector int count trace करके हो गया. For integer I0, I is lesser than nums dot size and I plus plus. इसको मैं क्या करता हूँ कि मैप के अंदर पुश कर देता हूँ. nums of I plus plus. अब मैं आइटरेट करूँगा for R2 E2 MPP C or return vector. कोई नहीं. नहीं यार ये ना यूजिंग मैप का पहले करके मैं करता. हैशिंग शायद 100 साइज के लिए जाती है आई थिंक. So I will also drop ऐसे पुश करना आई थिंक.
10. Yeah, 10, 10, 10, 10. ये भी हो गया काउंटिंग फ्रीक्वेंसी एलिमेंट इन एन एरे। एक चीज मुझे देखना है बस, इतना पार्ट कंप्लीट कर देना। ओके, प्रिंट नेम डॉट सी पी पी इसको हटाओ, काउंट फ्रीक्वेंसी डॉट सी पी पी यहाँ पे करना है, एंड रिमूव दिस एच, रिमूव हो जाएगा। मुझे अगर डबल वेक्टर हो तो उसमें ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है, ओके ये जानना है। तो इसके लिए हमें चैट जीपीटी का हेल्प लेना पड़ेगा क्योंकि हमने लॉजिक तो लिख दिया। भाई इतना क्या हो रहा है ऐसे, वो भी है ज़्यादा ही भारी हो गया सही। ओबीएस तो ठीक काम कर रहा है आज। भाई देख रहे हो कितना लैग कर रहा है भाई। इतने हैं यार, अब मैं किसमें है। देखो ठीक है, अब नीचे का ये देखते हैं कि ये कैसे करता है। अगर डबल वेक्टर होता है, सिंगल वेक्टर के लिए तो चलो मैं कर लूँगा, ठीक है। So we have to store it into a double vector, and then we call the functions. Okay, so now iterate it, and okay, समझ गया, and I understand it. Okay, so yeah, so what we need to do, we can store this, right? Count frequencies खुद ही आ जाता है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। नॉर्म से पास हो गया, ठीक है। और ऑटो it to answer C out, we it dot first B ले लो। So मैं for integer I from 0 I till goes to answer dot size comma I plus plus mpp of nums of I plus plus. Okay, map here and iter. So I will also use vector enter solution लेते हैं इसका नाम, ठीक हो गया। सो सॉल्यूशन भी वेक्टर करा, देन अब मैं क्या करता हूँ, फॉर अप टू इट टू मैप पे ट्रेवल करवाता हूँ, एंड solution dot push back it, so we have to store it like a array, so it solution
1 2 3 4 5 5 activate your extension. Zero index and it got 0 and 1. Oh, oh, भाई इतना क्या कर दिया मैंने भाई व्हाट द फक हो गया भाई मैनुअली करने में तो कोड तो पूरा फट गया AI हेल्पर आस्क जेमिनी अच्छा ये जेमिनी भी तो है स्टार्ट चैट कोड फट गया है पूरा गंदा फटा है ठीक है सही चलो रिस्पॉन्स किसका अच्छा है ठीक है ये भी पता चल जाएगा थोड़ा लार्ज देता है ये तो चलो ठीक है लेकिन एरर कहाँ है मेरे को ये बताओ कोड तो पूरा फट गया और सही है मतलब वैसे लॉजिक तो सही है बट कोड नहीं फटना चाहिए भाई ऑलमोस्ट every वर्क फॉर द issue movement ओके मुझे लग ही रहा था So I will take this and CLR CLOSE close नहीं CLEAR clear अरे साला क्लियर भी नहीं हो रहा GCC count FREQ.CPP मेरे शायद उसी में ही गड़बड़ लग रहा है मेरे को ये देखो इसी में ही गड़बड़ है कुछ रुको इसी कोड को पकड़ता हूँ मैं फिर से चला के देखता हूँ वैसे गड़बड़ी तो नहीं होनी चाहिए वैसे कोड में ठीक ही था मेरा कोड इतना तो मैं यकीन रखता हूँ आई डोंट नो देखो ठीक आ रहा 5 काउंटर फ्रिक्वेंसी 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 3 एक और 3 सो 1 2 बार 3 है सही आ रहा है यार कुछ या तो एक एक्सटेंशन एक्टिवेट नहीं हो रहा भाई ये गड़बड़ी कर रहा कुछ आंसर तो मेरे सही आ रहे
Okay, so let's move to the another question यार. इसके चक्कर में हमारा बेसिक ही कंप्लीट नहीं हो पाया. हैशिंग हाईएस्ट अकरिंग एलिमेंट इन द इन एन अरे ये तो लीड कोड का बाद में कर लेंगे क्योंकि लीड कोड का बहुत टफ है, थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट टफ है. इसको हमने कर रखा था बट स्टिल वी आर नॉट डूइंग. आई डोंट नो, इसको थोड़ा बाद में करेंगे. फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे 4 है तो इनको जैसे 3, सो 1 में क्या करना पड़ेगा, 3 एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा. 2 पे क्या करना पड़ेगा, 2 वो करना पड़ेगा. सो एवरीवन इज लाइक 4 आ जाए तो एंड टोटल ऑपरेशन कितने करने, 5. तो इसको बाद में करेंगे बट स्टिल अभी हम स्ट्राइवर शीट को फॉलो कर रहे हैं. तो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे है हाईएस्ट अकरिंग एलिमेंट इन द एरे. So here is 333, so output is here 3. Okay, so इस क्वेश्चन को हम लाइक मेरे जो दिमाग में आता है वो दो तरीके से सॉल्व करते हैं. So first one is using hashing and second one is like simple take an count which is occurring as the maximum. या नहीं, मैप से हो जाएगा, रुको मैप से ही हो जाएगा ये. ओके, सो आई विल टेक मैप int comma int mpp for integer I equals to 0, I is lesser than nums dot size comma I plus plus mpp of nums of I plus plus. So I will all the push all the, so अब मैं क्या करता हूँ, for auto it to mpp if. सो अब क्या हुआ, अगर मेरे पास पेन है तो आई थिंक पेन तो था यार, पता प्रॉब्लम यही होती है साला, मेरे लिखते लिखते पेन गुम आ जाती है. तो 1 कितनी बार करूँगा, 1 बार. 2 कितनी बार करूँगा, 2 बार. 3 कितनी बार करूँगा, 3 बार. if it dot second, if it dot first dot second is, if it dot first dot second is someone is so what I'm doing, so 4 is okay, so here अगर मैं बात करूँ, so 2 अपीयर हो रहा, 2 4 अपीयर हो रहा है, 2, so 4 अपीयर हो रहा है 2 बार. इतना तो मैंने सही करा था, एक अदर. थोड़ा हिंट मिलेगा, अरे यार हिंट भी ला गया.
अब मैं क्या करूँ? सो लेट मी थिंक, इसको मैंने क्या, अब मैप में अब मैं क्या लगाता हूँ? सो सबके अकरेंसेस आ गए, ठीक है। क्या सोच रहा है, दिमाग में आ ही नहीं रहा। फोर हैंड अपेयर। सो व्हाट आई एम डूइंग, हाँ, जैसे वाले को मानते हैं ना, पहले वाले को फर्स्ट वो मार दो। इंट सॉरी, इंट मीन, इंट मैक्स, सॉरी मैक्सिमम निकालना है ना, सबसे ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है। सो मैप में क्रिएट करा इफ it dot second, if it dot and is greater than also and int maximum frequency which is currently 0, मैक्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस टाइम पे भी आता है मैक्स फ्रीक्वेंसी होगी हमारी आपका 8 डॉट सेकेंड, ओके। एंड जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 डॉट फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि हमें वो वाला भी जानना है, ठीक है। आप ऐसे, ठीक है, अगर नहीं, अगर दोनों इक्वल, ये वाला भी तो समान है। इफ 8 डॉट सेकेंड इक्वल्स टू 8 डॉट मैक्स फ्रीक्वेंसी इक्वल हुआ, तो उसमें से जो मिनिमम हुआ वो निकालेंगे। आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा 8 डॉट फर्स्ट, so we have to return answer, yeah. Okay. Just to 8 dot max frequency. Okay, so now every test case is now passed. Let's दूसरा है हाई स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। सो हमने बेसिकली क्या करा, मैंने क्या करा कि आई विल टेक अ इंट मैक्सिमम एलिमेंट ले लिया, उसको मैंने कंपेयर कराया। देखता, सो इसको ऐसे करेंगे, समझ गया। सो गाइस प्लीज यार फटाफट आ जाओ यार, अकेले अकेले मन नहीं करता है। ये पता नहीं पागल जैसा बनने में।
अरे बन जा भाई, इतना टाइम तो चलो दूसरे में कर लेते हैं, तब तक का ऑनलाइन कंपाइलर। ओके, यहाँ पे बन गया। तो आई थिंक स्लो क्यों चल रहा है, आई डोंट नो। सो मैं यहाँ पे नीचे पे खाली इसको मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ। ओके, रीसेट कर देता हूँ एंड आई हैव कॉपी दिस एंड कंट्रोल सेट। ठीक है। ऑब्जेक्ट वन। पता नहीं अभी यहाँ पे एक्सटेंशन तो वर्क नहीं कर रहा। आई थिंक जब रीस्टार्ट करूँगा तभी हो जाएगा। See out. Yes, so मैप ले लेता हूँ। अंदर पे जाएगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विच
यार ये फिर से प्रॉब्लम कर रहा, कोई नहीं, कोड को यहाँ टेस्ट कर लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो दो तीन तीन तीन, एक, कुछ तो गड़बड़ हो रखा है। कुछ तो गड़बड़ है लाला। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट वन क्रिएट हुआ, इंटर एंड वेक्टर इंटर नम्स currency nums आंसर के अंदर स्टोर होगा। मैप लिया answer which is currently 0, maximum efficiency, solution object. So मैं क्या करता हूँ, रन डिबग करता हूँ। Okay, I understand. Okay. एरर कहाँ पे आ रहा था? रुको, साइज इसका हो गया एन। अब रन करवा, 6 1 2 2 3 3 3, 1 2 2 3 3 3। So the element answer is 0, मतलब कि कुछ आंसर में गड़बड़ी हुई। Maximum frequency is currently 0 and answer which is intermax अभी हमें पता नहीं है। चार एक दो so the most recurring element is seen, I understand। 6 1 2 2 3 3 3, so the most recurring है, so ठीक हो गया। सो मैं इन सबको क्या करता हूँ, गिटहब में पुश कर देता हूँ। ओके, पब्लिश टू गिटहब। इस गिटहब का नाम क्या है? शीट पब्लिश गिटहब और पब्लिक रिपोजिटरी। ओके, वो गिट कमिट होते रहेगा, कितनी बार
डन। क्यों यार? ओके डन। तो अभी थोड़ा एक्सटेंशन भी वर्क नहीं कर रहा, सो दैट्स रीजन अभी थोड़ा ही 2 आवर्स का कम होगा, बट मैं इस कर को कल को मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले करके देन आई विल कंटिन्यू फर्दर। अभी हमारा हैशिंग तो कंप्लीट हो गया। कल मॉर्निंग में थोड़ा सा रिकर्जन के बच रखे हैं, उनको हम कंप्लीट कर देंगे। एंड बहुत ही ज़्यादा नहीं है, टफ है, बेसिक है। एंड टफ सिचुएशन तो हमें वहाँ पे आएगी जब हम वी आर सॉल्विंग द एरेज क्वेश्चन, बाइनरी सर्च क्वेश्चन। आगे को बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे वी आर फेसिंग प्रॉब्लम। एंड कुछ कॉन्सेप्ट हमारे लिए बेसिकली नहीं हो सकते, सो दैट्स रीजन। ओके। सो तो 50 मिनट 1 मिनट की है, सो स्टॉप करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं आपसे कल।